Emirates Towers. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का इंटीरियर आंखों के लिए एक शानदार ट्रीट है जो आपको महसूस करा सकती है कि आप एक सपने में हैं। 7 मंजिलों में फैले हुए इस संग्रहालय की प्रत्येक मंजिल, जिसमें शामिल है अंतरिक्ष यात्रा, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आदि सहित, यह कई सारे कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। दोस्तों, इस म्यूजियम के आकर्षणों को 5 चैप्टर में विभाजित किया गया है। पहला चैप्टर है जो 5वीं मंजिल पर है, जिसका नाम ओएसएस होप है, जो आपको अंतरिक्ष की यात्रा के अनुभव पर ले जाता है। दूसरा चैप्टर है द हिल इंस्टीट्यूट, जो म्यूजियम की 4थी मंजिल पर स्थित है और वो आपको अमेज़न की जंगल की सुंदरता का आनंद लेने देता है। जबकि तीसरी मंजिल पर तीसरा चैप्टर है अलवाहा, जो आपको अपने दिमाग और शरीर से जुड़ने में मदद करता है, यानी कि अलवाहा एक रिलैक्सिंग जगह है। इसके बाद चैप्टर 4 का नाम है टुमारो टुडे। ये फ्लोर भरा हुआ है टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के साथ। और आखिर में म्यूजियम का लास्ट चैप्टर विजन ऑफ द फ्यूचर पे आधारित है, जो विशेष रूप से बच्चों के लिए है, जिन्हें भविष्य का नायक माना जाता है। अगर संक्षेप में कहूँ तो ये प्रदर्शनी चैप्टर भविष्य की हमारी समझ का प्रतीक है, या यही अगले 50 वर्षों में कैसा दिखेगा उसके ऊपर आधारित है। जैसे ही आप इस संग्रहालय में प्रवेश करते हैं, विशाल लॉबी में तैरते हुए फ्लोटिंग एनिमल थीम वाले एरोबेस के साथ आपका स्वागत करती है, जो काफी विशाल है और बड़े से हॉल के चारों ओर घूमती रहती है। जैसे ही आप इन तैरते हुए रोबो जीवों से अपनी आंखें हटाते हैं, आपकी आंखें सफेद पैनलों की दृष्टि से चौड़ी हो जाएगी, जो छत का निर्माण करते हैं और सुंदर अरबी लिखावट को घेरते हैं, जो सूरज की रोशनी को अंदरूनी हिस्सों में एक चमकदार पैटर्न बनाने के लिए लाता है। दोस्तों, जैसे ही आप संग्रहालय के अंदर प्रदर्शनियों का अपना दौरा शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले थोड़ा रेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये म्यूजियम काफी बड़ा है। और हाँ, इस शानदार म्यूजियम की विस्मयकारी लॉबी की एक झलक देखना बिल्कुल ना भूलें। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का इंटीरियर उतना ही खूबसूरत है जितना कि यह बाहर से दिखता है। ये म्यूजियम जो 30,000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसमें भविष्य के आइडिया और इनोवेशंस के बारे में अनुभव और एग्जिबिट किया गया है। तो आइए हम विस्तार में जानें कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर आपके लिए क्या मायने रखता है। Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world.
محطة الفضاء المدارية أمل، وهي أكبر محطة مدارية. Solar panels circles the moon, extending for over 10,000 kilometers. The solar energy collected in the panels is converted into laser beams of electric energy. These lasers beam towards a network of deflectors and satellites. The deflectors redirect the laser beams towards satellites that orbit the Earth. Welcome, ladies and gentlemen. We are currently standing in the heart and center of OSS Home. This is, on my right, is the Earth overview. The Earth overview is a state-of-the-art monitoring station allowing us to track the environmental changes on Earth. We are currently orbiting Earth with an orbital speed of 11,000 kilometers per hour. As we orbit Earth, we can monitor key weather conditions and global climate changes. As you can see on both sides of the screens, there are pop-up windows that tells you where disappeared now, sorry. That tells you where we are orbiting over and all the different changes in environment, whether it's a positive or a negative change. Now, the information we collect through this monitoring station is part of a broader initiative with our scientists who are trying to save the planet and resurrect the damage to our ecosystem through artificial intelligence. They are trying to regenerate new forms of life and species. These new specimens will be able to survive and withstand various harsh environments. Unfortunately, after training, her first mission became her last as she lost her life in the explosion.
My name is Amika. I'm a humanoid robot and I work for the Museum of the Future. Do you have any question for me?